Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine and safe at home. Today I have brought a new chapter for you people. We have already completed one chapter, that is our first chapter of textbook. Now I have brought a very interesting chapter for you people. In this chapter, we will going to see the advancement in the field of biology. So the name of the chapter is not new for you people. You have already heard about this term. So our new chapter is biotechnology. Now biotechnology itself a complete a branch of science, we can say. Biotechnology is not a new term for you people. It is already there in your syllabus in your 10th standard. आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है इस बारे में. Now here in this chapter we will going to study about the advancement in the field of biotechnology. What are the different works going on in the world with respect to biotechnology. Now basically अगर हम लोग biotechnology की बात करेंगे, so it is the application of different technology on the living organism to improve the quality, not only to improve quality but also to provide goods and services to the human welfare. Now here we will see the definition of biotechnology given by the different scientists as well as by different organization in different way, because it is already a very broad field of biology. So in every organization it is having the different applications. So accordingly we will see the different definitions of biotechnology over here. The term biotechnology was coined in 1917 by Hungarian engineer Karl Ire to describe a process for large-scale production of pigs. Now, according to him, biotechnology can be defined as application of technology using the living organism to obtain useful products. It has been broadly defined as the development and utilization of biological forms, products or processes for obtaining maximum benefits to man and other form of life. It may also be defined as use of scientific methods with organism to produce new products or new form of organism, or we can say any technique that uses living organism or substances from those organisms to make or modify a product to improve plants or animals, or to develop microorganisms for specific uses. Now let's see few more definition of biotechnology. Biotechnology is a branch of science in which living things are used to make new products. It is the use of living organism or processes to make products useful for mankind. तो जो भी डेफिनेशंस हम अब तक देख रहे हैं, इससे ये क्लियरली समझ में आ रहा है दैट इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग बट इट इज़ यूज्ड ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द लिविंग थिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड. That is the biotechnology. Let's see one more. Biotechnology is the study and manipulation of living things or their components, molecules, cells, tissues or organs for the benefit of humans or other animals. This term has been used since 1970s to reflect the application of exciting new technologies to the research and development of products from plants and animal cell. It is not like that only human beings can take advantage from it, but we can give more quality to the plants as well as for the betterment of animals also we can use this biotechnology. So we will see in very detail in this chapter that what are the different fields where we can use this biotechnology. Now let's have a look on the different branches where thus biotechnology is having impact. We can see the bioinformatics, genomics, proteomics, plants agricultural or crop improvement, or it will be a genetic engineering or health care or pharmaceuticals, then diagnostic, fermentation technology, food innovation technology, or energy or environment management, और animal inoculation और animal का in vitro culture. ये सारे ऐसे branches हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा impact हमको biotechnology का देखने को मिलता है. Let's have a look on the major areas where biotechnology is having a great impact. So in biotechnology, it is utilized in the field of microbial as a microbial biotechnology or animal biotechnology, or we can use it to environment related problem as in environmental biotechnology,
Then if we are using it in terms of health, so it will be considered as the health biotechnology. And if we are giving benefit to the plants, so that will be the plant biotechnology. So after observing all these different branches related to health or related to plant or related to animals or environment, one thing is very clear in our mind that this technology is useful for every field of life. हम लोग हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, even though on animals as well as on the plants, as well as to cure the problems related to environment. So very upcoming technology it is. और इसका इस्तेमाल करके जो है आजकल बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं in every field of life. So let's have a look on few applications also of biotechnology. The applications of biotechnology, among that the very first one will be the production of new and improved food. We can improve the food quality by using biotechnology. We can improve livestock. We can use it in industrial chemicals. We can use it in pharmaceutical industries. We can use it as a diagnostic tools. We can use it for a recombinant vaccines. Vaccine production के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. We can use it to protect environment also, as well as we can use it to save or to protect the endangered species. That is the most important demand of today's era, to protect the endangered species. Now if we will talk about history, so the history of origin of biotechnology is as old as human civilization. Development of biotechnology in terms of its growth occurred in two phases, that is traditional biotechnology and modern biotechnology. Now let's have a look on traditional biotechnology. Traditional biotechnology itself is a complete industry, as the alcohol can be used as a food or for pharmaceutical industry. Production of probiotic yogurts, in which the whole microorganism is used, that is present in the final product. Many antibiotics are made of microorganism. The enzymes are also used in the textile industry to soften the genes. The traditional biotechnology is used to make detergents too. These all are the examples what we are using in our day-to-day life. So the traditional industry or traditional biotechnology is nothing but the very basic type of work what we are doing at our house level, we can say, or at the small scale industrial level, like the preparation of curd, ghee, vinegar, yogurt, cheese making, wine making, etc. It became an art of kitchen in Indian houses. It was more an art than science. Till that time, people did not know also what they are doing or how exactly the process occurs and the organisms causing this process. So the contribution made by several chemists, biochemists and microbiologists over the time would explain the mechanism of process and also the nature of microorganism causing the processes. So these all will be included as the traditional biotechnology. We can see few more example of the traditional biotechnology. That is whatever we have discovered, that is by accidentally, we can say, that is to improve flavors and textures of our food products. Then deliberate contamination with the bacteria or fungi, that is the mold. So we can take the examples जो हम लोग already discuss कर चुके हैं, जैसे कि preparation of bread, yogurt, sour creams, cheese, wine, beer, or sauerkraut, that is a pickle of vegetable that we are using by the using vinegar. This is all will be nothing but the traditional biotechnology only. Now all this is about the traditional biotechnology, but what next? यहीं तक तो ये चीज़ें limited नहीं हो सकती. So during 1970 a new technique of recombinant DNA technology, जिसको RDNA technology भी कहा जाता है, was developed and then established by the scientists Stanley Cohen and Herbert Boyer in the year 1973. This technique has changed the overall outlook. Then the technique permits to change or to modify genetic, that is heritable material, for getting new specific products. The combination of biotechnology and production technology based on genetic engineering evolved into a modern technology that is also called as new biotechnology. Now what is the difference between these two technology? There are two major features of technology that differentiate modern technology from classical or old biotechnology.
that is the capability of science to change the genetic material for genetic new specific products through rDNA technology, polymerase chain reaction, microarrays, cell culture and fusion, and bioprocessing, as well as the ownership of technology and its socio-political impact. तो ये वो बेसिक रीजंस थे जिसकी वजह से जो है वो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को ओवरकम किया गया बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी. तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं RDNA टेक्नोलॉजी एज वेल एज PCR एंड सेल कल्चर और फ्यूजन और बायो प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इस चैप्टर में वन बाय वन देखने वाले हैं. Now, after the emergence of this new technology, that is the modern technology based on rDNA technology or recombinant DNA technology, all the conventional industries like pharmaceutical industries, agro industries, food industries, etc. are also focusing attention to produce biotechnology based product, because ये ऐसी एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई थी अब जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्वालिटी इन्हांस हो रही थी प्रोडक्ट्स की, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ रही थी. अगर हम लोग प्लांट्स की बात करेंगे, हाइब्रिड वैरायटीज़ कंज्यूम हो रही थी, तो जिसकी वजह से इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही थी. तो इसी वजह से सारे कन्वेंशनल जो इंडस्ट्रीज़ थे दे आर स्टार्टेड फोकसिंग ऑन the modern based technology. Now let's have a look about this modern biotechnology. Now this modern biotechnology is based on two core techniques, that is the two basic part on which it is working, that is genetic engineering and chemical engineering. Now we will talk about genetic engineering. So it was dealing, or it is dealing with the alteration of genetic material, that is DNA and RNA, while chemical engineering deals with maintaining sterile environment for manufacturing variety of useful products including vaccine, antibiotics, enzymes, organic acids, vitamin, therapeutics, etc. Now let's have a look on genetic engineering. Genetic engineering is defined as the manipulation of genetic material towards a desired end and in a directed and predetermined way using in vitro process. In vitro means inside the test tube. So here we can say that genetic engineers isolate a gene from an organism that has feature they want to impart to their future generation. Here we can see this phenomena by a good example, that is a single gene is isolated एंड मॉडिफाइड, दैट इज़ फॉर एग्जांपल एक सेल है जिसके अंदर जो एक डिज़ायर्ड ट्रेट हमको जो चाहिए, जो जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर मौजूद होता है, वो अगर हमारे पास है तो वी कैन आइसोलेट द टारगेट जीन एंड वी कैन मेक द कॉपीज़ ऑफ दैट टारगेट जीन, and that copies are inserted into the plant cells and induced to grow, and after that plant will grow. Seeds from the mature plants are studied for successful transformation. So like that we can alter, or we can altering or modifying an organism's genes so that its features or characters or the behaviors got changed completely. If I'll give you more simple example, so here there is a plant which is having lower quality, whatever quality it is having, it's of very low kind, but it is tolerant to drought. एंड वन मोर प्लांट इज़ देयर दैट इज़ हैविंग हाई क्वालिटी प्लांट, यानी कि जो भी प्लांट के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा हाई उसके अंदर क्वालिटीज़ है, जैसे कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंस है और उसकी जो है वो बहुत अच्छी उसकी प्रोडक्टिविटी हमको निकलती है, बट इट इज़ सेंसिटिव टू ड्राउट. तो ऐसे कॉम्बिनेशन करके हम लोग इसका जो टॉलरेंट टू ड्राउट वाला है फर्स्ट प्लांट का, उसका कैरेक्टर हम लोग लेके सेकेंड प्लांट का जो कैरेक्टर है हायर क्वालिटी वाला, उसके साथ हम लोग उसको मर्ज करके एक ड्राउट टॉलरेंट और हाई क्वालिटी वाला प्लांट बना सकते हैं with the help of this genetic engineering. So it is all about the genetic engineering. Now what other work we can do by using genetic engineering? We can provide better drugs, or better drugs can be obtained by the knowledge of genetics. Genetics testing can be used to detect the mutation regarding genetic disorders like cystic fibrosis, sickle cell anemia, हंटिंगसन डिजीज़ एक्सेट्रा, और जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम लोग जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू पता कर सकते हैं प्रायर. मोरोवर डिफरेंट टेस्ट वी कैन कंडक्ट टू डिटेक्ट द वेरियस कैंसर, यानी कि अगर कुछ सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू वहाँ पे कोई भी तरह का कैंसर हो उसके बारे में हम लोग डिटेक्ट करके उस पर्सन की लाइफ हम लोग जो है वो सस्टेन कर सकते हैं, बचा सकते हैं. बिकॉज ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ मिराकुलस वर्क,
Gene technology or genetic engineering is also called as a recombinant DNA technology और जीन क्लोनिंग, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ही ये जो है वो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आती है, जिसको जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है, बिकॉज टोटली वी आर वर्किंग ऑन जीन्स. सो देर आर सर्टन tools that we are using for doing this work or for performing the different kinds of experiments in the field of genetics, that is in rDNA technology. So we have to see these tools one by one in very detailed way along with its function in rDNA technology. So the different basic tools are restriction enzyme, gel electrophoresis, PCR, plasmid, DNA fingerprinting. PCR is nothing but polymerase chain reaction, and about this we will going to study in very detailed way in this chapter. तो ये जितने भी सारे steps और tools जो दिए हुए हैं for performing the rDNA technology experiments, तो हम लोग जो है वो इसको बहुत डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. वन बाय वन वी विल गो थ्रू दिस एंड यू विल मेक आउट कि एक्चुअली ये परफॉर्म कैसे किया जाता है. Among these tools, the very first one is the restriction enzyme. Now this restriction enzyme is having the ability to cut the sequence of DNA, or we can say the restriction enzyme belong to a class of enzyme called as nucleases. So these enzymes can cut the DNA double helix स्पेसिफिक सीक्वेंस. आपको पता है कि जो डीएनए का डबल हेलिकल जो सीक्वेंस होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को जो कट करने के लिए कुछ सीजर्स लगते हैं, तो ये सीजर्स जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं. These restriction enzymes are of two type, exonucleases and endonucleases. Exonucleases is a type of enzyme that remove nucleotide from the end of the DNA. बहुत कॉर्नर के साइड का जो बैंड होगा उसको कट करने के लिए एक्सोन्यूक्लियस यूज़ होता है, और बिल्कुल उसके अपोजिट में एंडोन्यूक्लियसेस होता है. These makes the cut at a specific position within the DNA. These enzymes recognize a specific sequence called palindromic nucleotide sequence in the DNA. तो what is this restriction enzyme और किस तरीके से ये काम करता है, एक्सियोन्यूक्लियस कैसे काम करेगा, एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करेगा, और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, दिस इज़ टोटली न्यू टर्म फॉर यू पीपल. तो आगे हम लोग और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट टूल इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो हैव अ लुक ऑन दिस. Macromolecules such as DNA, RNA, proteins, etc. They are synthesized in the living cells which vary in their molecular weight. सबका अलग अलग अपना molecular weight होता है. Solubility और presence of charges और absorbance of light, ये सब में जो है वो अलग अलग होता है. So several techniques are used to isolate and characterize the micromolecules, because इस सब का separate करना बहुत ज़रूरी है genetic engineering के लिए. So the size of different types of molecules vary and therefore their molecular weights also vary. So the technique used on the basis of molecular weight are gel permeation, osmotic pressure, ion exchange, chromatography, spectroscopy, mass spectrometry or electrophoresis. Now here we will see about the electrophoresis. Electrophoresis is the separation of charged molecule applying on electric field. It is applied for the separation of DNA, RNA and protein. DNA being negatively charged migrate to the anode. Small fragments of DNA molecule move faster and thus separate faster. So by this method we can separate the DNA fragments. Hence we can separate the different fragments by using the gel electrophoresis method also, because use of agarose gel electrophoresis or page, SDA page are the different methods of electrophoresis. And this technique, जब gel electrophoresis का इस्तेमाल किया जाता है, तो we are using the different kind of agarose gel, and by using such agarose gel we are separating the different strands of DNA as well as RNA. because ये gel electrophoresis की टेक्निक में हम लोग मेनली फोकस करते हैं सेपरेशन पे DNA के. So using gel technology to study DNA molecule, we can separate the strands of DNA as well as RNA. You can see in this कि कैसे strands बन जाते हैं, and ये different strands होते हैं, separated strands of the double helical structure. तो इस तरीके से gel electrophoresis का इस्तेमाल करके हम लोग DNA की स्टडी कर सकते हैं, और उसके अंदर से जो डिज़ायर्ड जीन या कैरेक्टर हमको चाहिए होता है उसको हम लोग बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हैं.
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अगर हम लोग और बात करेंगे, सो इट इज़ अ मेथड फॉर सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन वगैरह। तो ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्जेस, उसको जो है वो अलग करना पड़ता है। हियर यू कैन सी कि कैसे जो है वो मिक्सचर जो होता है डीएनए का वो ट्यूब्स में डाला जाता है एंड दे हैव रन इन द फॉर्म ऑफ जेल, उसको रन किया जाता है बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस यहाँ पे अलग हो जाते हैं और लॉन्गर मॉलिक्यूल और शॉर्टर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे जो है वो अलग हो जाते हैं। इस तरीके से जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, ये अलग अलग जो है वो अपने चार्जेस के बेसिस पे सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अलग करना बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। So here we have seen the two tools for recombinant DNA technology. These are the two basic methods or components of molecular or we can say the macromolecules को किस तरीके से अलग करते हैं उसके जो हम लोगों ने यहाँ पे दो टेक्निक देखी। We have seen the restriction enzyme and we have seen the technique of gel electrophoresis। तो यहाँ पे जो है हम लोग रुक जाते हैं बिकॉज आगे का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो आई वॉन्ट यू पीपल टू फर्स्ट अंडरस्टैंड टिल दिस पॉइंट। आप लोगों का ये काम है कि आप अच्छे से जो है सारी डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी डेफिनेशंस आप पहले अच्छे से एक मरतबा गो थ्रू करोगे अपने PDF में। और इसके अलावा अदर रेफरेंस मटेरियल आपको अगर ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो उससे भी आप लोग जो है वो मदद ले सकते हो और ज़्यादा आपका कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में जो भी मैंने आपको अभी बताया है, जो भी नॉलेज आपको मिली है, तो उसके बारे में भी आप लोग और ज़्यादा अगर मालूमात चाहते हो तो आप लोग दूसरे जो है वो वीडियोज़ और दूसरा कंटेंट जो अवेलेबल है नेट पे उससे भी आप जो है वो अपनी मदद ले सकते हो। बट आई वॉन्ट यू पीपल टू जस्ट गो थ्रू द टॉपिक बिकॉज ये चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट वाली चीज़ें जो है वो सीखनी है कि क्या क्या बायोलॉजिकल फील्ड में इन अ डे टू डे लाइफ कैसे बायोटेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हो रहा है और किस तरीके से जो है चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो है मैं अपना ये जो आज का हमारा कंटेंट है उसको मैं रोकती हूँ। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है वो PCR टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। PCR इज़ नथिंग बट द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो किस तरीके से PCR काम करता है और किस तरीके से वहाँ पे RDNA टेक्नोलॉजी में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में PCR का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग इंशाल्लाह अपने अगले सेशन में सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों का ये असाइनमेंट और ये होमवर्क है कि आप लोग जो है वो जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको बहुत अच्छे से एक मरतबा देखोगे, अपने PDF में उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करोगे। एंड इफ़ विल बी हैविंग एनी डाउट सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप मुझसे जो है वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट टूल्स जो हैं आगे वो हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। टिल दैट टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।